Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello viewers, today we are going to talk about the development of emotion in psychosocial development of child, and specifically we'll to talk about the development of emotions related with love. And there is emotional competency. It is sort of ability to develop that relationship between two persons and the bonding that is going to be strengthened. और इसको अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं that we use for our companion, that we can use for our son, and also with the different relations. I love my parents. I love riding my bike, or I love psychological expression class, and also I love Mr. Jameel, and I also love the movie so. तो ये बहुत सारे इजहार हैं जिसके लिए हम बहुत सारे पीछे उसके वो एक्सप्रेशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं जो हम एसोसिएट कर लेते हैं, जिसका ताल्लुक इंटरेस्ट के साथ है, जिसका ताल्लुक कंफर्टेबिलिटी के साथ है, हमारी वो जो डिज़ायर्स हैं, बेसिक डिज़ायर्स ऑफ द चाइल्ड, उसके साथ उसका ताल्लुक है. तो जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल और द चाइल्ड, वी टू डेवलप दैट फॉर द कंफर्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. तो तालीम के एतबार से अगर हम देखना चाहते हैं कि बच्चे की अगर we need that they express that I love with the books, I love with the expression, I love with my class, तो वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हों जो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हों, जो उसको कंफर्टेबल करें, जो उसको रिवार्ड करें, जो उसको ऑनर दें, जो उसको सेल्फ रेस्पेक्ट दें. And this will ultimately develop the social, emotional competency. And there is a triangular theory. Sternberg is the originator of that particular theory. And asking about the consummate love, the three component of that consummate of love, the origin of that love, that person is initiating about the intimacy. Second is the passion, and then the commitment. These three things are the component, and we'll see. What about the intimacy? Intimacy mean the feelings with the help of which individual is comfortable to see others. दूसरों के साथ वो मिलना चाहता है, वो मिलता है, और एक बॉन्डिंग डेवलप होती है विद दी अदर पर्सन. मदर चाइल्ड पार्टनर हो सकते हैं, कोई पार्टनर हो सकता है, उनके दरमियान एक इंटीमेसी है. टू हैव अ चांस टू बी इंटरेक्टेड, हमें अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए उनके साथ भी, टू हैव इंटीमेसी टू डेवलप द बॉन्ड ऑफ लव. सो इसमें वी एक्सपोज that ability, that vulnerabilities, and we also get agreement with that situation, that I feel close to my significant other, जिसके लिए हम अपने आप को मख्तस करें, अपने वक्त को सर्फ करें, अपनी तमाम तरह की सलाहियतों के साथ, अपना पोटेंशियल टाइम मोबाइल को एक तरफ रखते हुए अपने बच्चों के लिए वक्फ करें. और फिर यह है कि उनके साथ वी टू गेट इंटीमेटेड, वी टू गेट इंटरेक्टेड, वी टॉक अबाउट सम पर्सनल थिंग्स, वी ऑल्सो शो लव, वी ऑल्सो शो विद यूजिंग सम गुड वर्ड्स. और हमें ये कहना है कि आई लाइक योर प्रेजेंस, आई फील कंफर्टेबल in your presence. So will become intimated and will become well bonded with the love of our kids. इसी तरह हम ये देखते हैं कि passions also refer to the experience of agreement.
one of the agreement on the situations that I find my significant other personally attractive. We agree upon these situations. Yes, उसकी आदत, उसकी बातें अगर अच्छी हैं, हमने उसको अच्छा समझा है, तो सबसे पहले उसको अच्छा कहें that you are performing good, this thing is good, your expression is good, very attractive. स्पेसिफिक डायरेक्शन हम देते हुए उसको एक अटैचमेंट के साथ वाबस्ता करें और उसके साथ वाबस्तगी का बहाना ढूंढें और उसको डिफाइन करें, उसको एक्सप्रेस कर दें कि दिस थिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, दैट इज मेकिंग यू वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, दैट योर एक्सप्रेशन इज गुड, your sound ability, your expression, your sitting style, so on, many things. And we fantasize the others. Yes, you are performing extraordinary, whatsoever expressions. उसमें बहुत सारे ऐसे बहाने हैं जो हम ढूंढ सकते हैं जिसको हम एक सोर्स बना के हम उस बॉन्डिंग ऑफ लव को मजबूत कर सकते हैं. The thing that is commitment, consisting of many things, two decisions, one's your partner and one is for the others. So there is some statements on which we commit, we say something, and we would like to fulfill that statement, and we would like to fight for that statement, to fulfill that. Even हम देखते हैं कि बच्चा भी अपनी उन स्टेटमेंट्स के लिए बहुत कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए वो कमिटेड है, बहुत सारी इमोशंस हैं जिसके लिए वो कमिटेड हो जाता है. तो वी प्रेजेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वी जनरेट सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस इन विच द कमिटमेंट्स आर टू बी settled down, and that statement should be finalized and should be expressed, and there should be a stability in the emotions when these little things are going on between the partners. Thank you very much.